A very good morning to all of you and welcome back to the social science class. See beta, yesterday we have started a new chapter number 9, geography, and the chapter name is human resources. And in this chapter we have read about the distribution of population, thickly, moderately and sparsely populated areas, and some physical factors we have discussed. Now today we will discuss about the other factors. Like first one is the mineral deposits, mineral resources. See, so let's start. The areas rich in mineral deposits attract people and this results in higher density of population. ये areas जो हैं generally mineral deposits से rich हैं and इन areas में higher density of population available है. Like gold mines in Australia attracted peoples to this otherwise barren desert land. Next is industries. The development of industries in any region provides employment opportunities. जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं उन एरियाज़ में डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं. so that thus people migrate to such areas not only from the surrounding areas but also from far off places. that mean इंडस्ट्रीज़ जहाँ होंगी वहाँ लेबरर्स की ज़रूरत होगी, so that so many people migrate to such areas. Okay, and the industrial areas support a very high density of population as in northeastern USA. Now next is means of transport. Next is means of transport. So the economic activities are attracted to those areas which have an adequate and efficient network of transportation. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ होंगी सो दैट ट्रांसपोर्टेशन की नीड ज़रूर होगी. सो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर लोकेटेड ईदर इन द प्लेन्स और अलोंग द कोस्ट्स, सो विच प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. सो दस such places are thickly populated areas. Next is urbanization. The urban centers have diverse economic activities. Moreover, the urban areas also provide better living conditions than the villages. अर्बन एरियाज़ की तरफ लोग मूव ऑन करते हैं बिकॉज ऑफ बेटर लिविंग कंडीशंस एज कंपेयर टू villages. So thus people migrate to cities in search of work. Urban areas have more than 5,000 person living per square kilometer of land. अर्बन एरिया का जो पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया में बताया गया पॉपुलेशन कितनी है, 5,000 persons at least. Next is government policies. Government policies are another factors. Sometimes the government policies cause migration of people from one region to another. कई बार कुछ government policies की वजह से भी लोग migrate करना पसंद करते हैं. Under the British rule, Indians were sent to Malaya, Fiji and Mauritius to work on the plantations. So the blacks from Africa were brought to वर्क ऑन फार्म्स इन अमेरिका. सो इन पॉलिसीज़ की वजह से भी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी माइग्रेट करना पड़ता है लोगों को. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंज ऑफ पॉपुलेशन. चेंज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, से अ डिकेड मीन 10 सालों में, कि नंबर ऑफ पीपल कितने चेंज हुआ 10 सालों के अंदर अंदर इन पर्टिकुलर एरिया. Population change can be expressed either in absolute numbers or in percentage. या फिर absolute numbers में पता हो या फिर percentage उसकी. See, population change depends upon 3 parts हैं. इसके population change को कैसे count करते हैं? First is birth rate, next is death rate and third is migration. Okay, the first, birth rate. The number of live birth or death per 1,000 persons in a year is known as the birth rate and death rate. मतलब एक साल में कितने लोगों का बर्थ हुआ है एंड कितनों की डेथ हुई है. सो रेस्पेक्टिवली पर 1,000 persons काउंट किए जाते हैं. एंड द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट्स इन अ ईयर
इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला जाता है. द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट इन अ ईयर गिव्स द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. जैसे कि हम पॉपुलेशन की एनुअल ग्रोथ रेट काउंट करते हैं. इफ द नंबर ऑफ बर्थ एक्सीड द नंबर ऑफ डेथ्स, अगर बर्थ ज़्यादा है डेथ से विद इन अ ईयर, देन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज. ओके, अगर बर्थ ज़्यादा हुई है और डेथ कम हुई है. हाउएवर इफ द नंबर ऑफ डेथ एक्सीड्स बर्थ इन अ ईयर देन द पॉपुलेशन विल डिक्रीज. अगर डेथ ज़्यादा हुई हैं विद इन अ ईयर बर्थ से, सो दैट द पॉपुलेशन विल डिक्रीज. दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ पॉपुलेशन. नाउ नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन चेंज. क्या ट्रेंड्स हैं? सी द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद बहुत चेंज हुआ है पॉपुलेशन का. एट दैट टाइम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाज ओनली 5 मिलियन. 5 मिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी. इट रोज टू अबाउट 500 मिलियन एट द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड 1750. एंड देन द एडवांसमेंट्स in the fields of science and technology, especially healthcare, improved the quality of life. इससे काफ़ी एडवांसमेंट से काफ़ी बेनिफिट हुआ लोगों को. इनिशियली द ग्रोथ वाज स्लो एंड द टोटल पॉपुलेशन रीच्ड अबाउट 1000 मिलियन इन 1820. धीरे धीरे ये ग्रोथ स्लो हो गई बट टोटल पॉपुलेशन बढ़ती गई, वो 1000 मिलियन तक पहुंच गई इन 1820 तक. सी द टेबल 9.1. दिस इज द टेबल population growth in the world from 1750 to 2025 तक दिया हुआ है. प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियन एंड द नंबर ऑफ ईयर्स टू एड 1000 मिलियन पीपल. नाउ सी द एनुअल ग्रोथ रेट वाज अबाउट 1% इन 1930. 1930 में 1% था and then which increased to about 2% in 1960. With assured food supply and improvement in medical facilities, people began to lead healthy lives. Okay, and this led to an increase in the birth rate. अच्छी medical facilities मिल रही हैं, healthy life मिल रहा है, तो birth rate increase हो गई and fall in the death rate. And it is estimated that the world's population may reach about 8,000 million by 2025. मतलब जिस रेशो से बढ़ रही है ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2025 तक 8,000 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी वर्ल्ड की. सो द डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू चेक द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उनको चेक कर रहे हैं. एंड इन द लास्ट 50 ईयर्स द ग्रोथ रेट हैज़ डिक्लाइंड स्लाइटली एंड द करंट ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड इज अबाउट 1.5%. However, the trend of declining growth rate greatly varies between developed and underdeveloped nation. दोनों में डिफरेंट रहता है. डेवलप्ड नेशंस में अलग है, अंडरडेवलप्ड नेशंस में ग्रोथ रेट अलग है. So about 95% of the total increase of the world population will be in the developing countries during the next 25 years. That means जो अभी मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो करती है. सो टोटल इंक्रीज 95% इंक्रीज ही नेक्स्ट 25 ईयर्स में डेवलपिंग कंट्रीज में ही होगा. एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और विद इन द सेम कंट्री ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द चेंज इन पॉपुलेशन. माइग्रेट कर जाते हैं लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. सो पीपल यूजुअली माइग्रेट फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड एरियाज. ऐसे एरियाज़ में जहाँ डेवलप्ड नहीं है वहाँ से डेवलप्ड एरियाज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. एंड द एडवर्स कंडीशन ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज़. अब रूरल एरियाज़ में कंडीशंस बिल्कुल एडवर्स हो गई हैं, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फोर्स पीपल टू माइग्रेट टू सिटीज़. सो इसकी वजह से लोग जनरली मूव ऑन करते हैं टू द सिटीज़. नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. In the population composition refers to the structure of the population. Age, sex, literacy and occupation are some of the main components of population composition. In this, these components vary greatly from country to country and from time to time. So first is एज कॉम्पोजिशन. एज किससे हम कैसे इसको कॉम्पोजिट करते हैं. सी एज कॉम्पोजिशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन ईच एज ग्रुप. एज ग्रुप्स बनाए लग जाते हैं. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप्स ऑफ 0 to 4 years, 5 to 9 years एंड सो ऑन. सो जनरली द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू चिल्ड्रन,
adults and aged 0 to 14, 15 to 59 and age 60 year and above. Now next is age 6 pyramid is also known as the population pyramid जिसे कहा जाता है. You can see in your book also कि अलग अलग कंट्रीज का दिया हुआ है. पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया एंड पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया. So in this help us to understand the population composition of any country. So ये ग्राफ देख के हम पता कर सकते हैं कि कैसी ग्रोथ हो रही है. So it tells us about the distribution of females and males in different age group. अलग अलग एज ग्रुप में कितना ग्रो कर रहे हैं. If the death rate as well as the birth rate are high, दोनों अगर हाई हैं, so then the population pyramid is broad हो जाएगा at the base and tapering towards the top. See figure 9.2 ऐसे जाएगा. And then this type of population pyramid represent the population of underdeveloped countries. ये जो इस टाइप का population pyramid बनेगा ये आपको शो करेगा. See these the Kenya ये underdeveloped country है, so that this condition is there. Now next, the pyramid shows that although the birth rates are high, still many children die in their infancy and thus very few people reach old age. So in this case, if the birth rate and death rate are low, birth rate भी low है, death rate भी low है, then the population pyramid is narrow at the base. Narrow होगा base से. You can see the figure 9.3 population pyramid of Japan. So in this type of population pyramid represent the population of developed countries. Okay, and the pyramid shows that the decrease in death rates allow more people to reach old age. Now next is 9.4 shows the population pyramid of developing countries, that means India you can say, and it shows that due to decrease in birth and death rates, the base of the pyramid has become less broad as in the case of a developed country. So in this ये developed countries की किस तरीके से बनेगा pyramid, you can see in your books also. There are two groups of people who are treated as dependents, those below 14 years of age and those who are 60 years and above. ये दो सेक्शंस हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो टोटली डेवलप्ड में आते हैं, अंडर डिपेंडेंट्स में आते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं. सो इन दिस केस see, people in age group of 15 to 59 years are the working population and are considered economically active. Okay, and migration of people also affects the age composition. Now next is sex ratio, means the ratio between males and females is known as the sex ratio, and it is represented as the number of females per 1000 मेल्स. 1000 मेल्स पे फीमेल्स कितनी हैं ये डिपेंड करता है. सो जनरली इट शुड बी बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड होना चाहिए, बट इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट मेल बर्थ एक्सीड फीमेल बर्थ इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज़ ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजन्स. कुछ बायोलॉजिकल रीजन्स की वजह से फीमेल्स कम हैं और मेल्स ज़्यादा हैं. सो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द सेक्स रेशो इज़ ऑफन अनफेवरेबल. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सेक्स रेशो बहुत कम है, अनफेवरेबल टू फीमेल्स, एंड दिस इज़ ड्यू टू हाई फीमेल मोर्टेलिटी, की गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है. सो दैट ये रेशो बहुत डिफर है. सो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेल्स migrate to search of in search of work, and this also disturbs the sex ratio, and thus it has been observed that in many European countries, Africa as well as Kerala in India, the number of females are more than the number of males. Now last two topics is literacy and population growth and development. See, in literacy, people are not equally educated in every part of the world. Okay, and major parts which affects the literacy rate are the levels of economic development, urbanization, standard of living, social status of women, availability of educational facilities, and government policies affects the literacy rate. And if the literacy rate is higher in urban areas, literacy rate is higher, हमेशा higher होती है in the urban areas than in the rural areas. So it is also more among the males than the females. ये भी है कि males को ज़्यादा educated है as compared to females. So literacy influence the social and economic development of a country.
Next and last topic of this chapter is population growth and development. See, the ratio of population growth affects the economic and social status of a country, and it influences the gainful utilization of natural resources. कि population growth किस पे इफेक्ट करती है, उसका इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस ऑफ द कंट्री. सो इन जनरल वी कैन से इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लो, दस द स्टैंडर्ड लिविंग इज हाई. डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ की ग्रोथ रेट लो है, सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी हाई है, एंड इट इज़ रिवर्स इन अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग countries. Okay, so this was your chapter. Now your syllabus is over. Thank you. Have a nice day.